Namaskar. Welcome to my discussion. Today I have with me Sri Anuj Mishra ji. I think in Kathak world he is so well known as a Kathak dancer, and definitely it's my duty to introduce him. He's such a wonderful dancer, and yes, there is a reason because he is the son of late Pandit Arjun Mishra ji of Lucknow Gharana, great guru, and he belongs from a traditional family that we will get to know from him. And not only that, he has established himself as a soloist, as a choreographer, and presently he is establishing himself as a guru as well, because through Facebook and online we can see how beautifully he is like creating. I would say creating because yes, the students are like the creation of a guru, and definitely after a certain time they can like create their own identity by them. So, Anuj Mishra, welcome Anuj. Namaskar, Sandeep Bhaiya. Thank you so much for the invitation. And this is going great in Kathak field. And people like you and dancers like you who are very established are taking this big step. I'm also willing to do that. But now a lot of good dancers, they have taken the initiative to have this kind of a meeting, interactive sessions with another dancers, another big gurus, and I think this is very good for today's people and what is today's situation going on. Because to connect with the audiences, connect with the people worldwide, Yes, so they know the situations of artists who belong to India. They know the problem of them, and we all can discuss how we can go ahead with this situation which is going on today's world in Qatar, especially. So thank you very much for that. It's really my great honor, my great pleasure to be associated with you for and this by event. this time, we all get to know the topic of my discussion is one point the establishment and sustainability of a male dancer in terms of socio-economic system. Yes, through the discussion with the gurus, I got to know how they struggled and how they balanced. They are both their uh, passion, their art, and at the same time finance as well. So before going to that point, I would like to ask you, how was your journey? Yes, we all know you are from a traditional family, and so you should start it. You would have started your performance or training from very childhood, but at what age did you start it performance? Yeah, see, I just give a small introduction of my journey. The thing is that I have started to learn dance when I was just 4 years old, and my father started to teach me, and he just taught me for 2 days. Because what happened that when he started, it was something inside, and I practiced whole day. He went to Maharaj Ji for his training. Padma Bhushan Pandit Birju Maharaj Ji, there is a disciple of him. So he went for that in Kathak Kendra. And when he came back in a night, he saw I was still practicing. Like I was so much attached to Kathak, it was in my heart. And this happened 2 days. So he said, no, I'll not teach you now. So first you finish your studies, because my father had so many struggles in his life, financially, mentally, health-wise, everything in his whole life. So he wanted me to at least finish my basic studies. So I have the knowledge, education-wise, and then he wanted me pursue in dance. So he said, you finish your studies first, and to understand rhythm, to understand few things about dance and music, he thought that I should learn tabla. So I had a basic training of tabla for 6 years. In the beginning, I had training with my Fufaji, Pandit Gopal Mishra ji. He's now based in Delhi, and he's a top rate artist in radio. So, and then starting 2 to 3 years, and then I learned tabla with Pandit Ravinath Mishra ji from Banaras. So that is my journey.
after but it was in my house. I was seeing my father performing every day. I was seeing him teaching every day. So it was somewhere inside, and I was enjoying tabla. Beside, I was enjoying my studies, and I was too much interested into cricket. Because meanwhile, in a time I wanted, when I pursued my high school that time, and I went to intermediate, I wanted to be a cricketer at that time, because I had so much interest to play cricket, and I was college of my school, college of my street, sorry, captain of my school, captain of my street, and also in my college, so I was very much interested. But So how was there the was no family. acceptance? How was the acceptance you as a dancer in school with like through the friends? Yeah, so I started my training after high school. Okay, so before that I was just playing tabla. But after my high school, when I went to college, and people knew my father. He's a very good Kathak dancer and guru. So I had a basic, like खड़े खड़े सीख जाते हैं ना, घर में पीछे पीछे खड़े खड़े थोड़ा सीख जाते हैं. तो जमुना के तट पर नाच कन्हैया, ये सब ऐसे ही सीख गए थे देखते देखते. हमारे पापा के बड़े सीनियर स्टूडेंट से अभी नाम भी कर रहे हैं. उसमें से कुछ संयुक्ता सिन्हा दीदी है, और रोजेला दीदी है इटली में, इसाबेल आनंद ने भी सीखा है, राजेंद्र रूपाली जी ने भी सीखा है. सब सीखने आते हैं यहाँ पे, पिताजी से टेक्निकलिटी भी सीखते हैं. कुछ उनके शागिर्द हैं जो 15-16 साल 20 साल उन्हीं के पास रह के सीखे. तो संयुक्ता दीदी की ट्रेनिंग भी 11-12 साल यहाँ पे हुई. बहुत हार्ड. कल उनका इंटरव्यू सुना, बहुत अच्छा लगा, और मेरे पिताजी को उन्होंने पढ़ंत भी की, देख के अच्छा लगा कि मेरे पिताजी को. हाँ, कल मैंने भी सुना. तो ऐसा है कि वो एक्सेप्टेंस ऐसा रहा कि जब मैंने परफॉर्म किया, मुझे बड़ा थोड़ा सा दिल में डर लगता था स्कूल में, जब आई वाज इन स्कूल, बिकॉज थोड़ा क्लासिकल डांस को लेके एक माहौल, मेल डांसिंग को लेके बहुत अच्छा नहीं है हमारी सोसाइटी में. व्हाई? बिकॉज पीपल वॉच बॉलीवुड वेरी मच in our country, and Bollywood most portrayed male dancers as, either they will be gay, either they will be in LGBT society, either they will be like this, so I'm not saying I respect everyone very much, and I respect people who are not straight, and they are very talented, have everything. But why you show always like that? Like that the people who do Kathak, they are like that. If you see you put any movie, you take any movie. For example, in latest you can see Raja Hindustani. Why you are showing, oh, how are you? You are doing like this. So it's very sad. It's very sad. It's not like actual image of a male Kathak dancer. It's not the actual image. Yeah. And we say that Lord Shiva has created Kathak. Okay. Who is bigger Yodha than Mahadev himself? And he was the god of dance. Okay. So I need to say that society have seen male dancing like this. Oh, even today's world YouTuber says like, oh, he's doing Kathak like this. Kathak. Why? We don't need you, me, Piyush, many dancers in today's world. Deepak Maharaj, everybody is like, man, we are totally mad, and we dance Tandavam. We practice for 10 to 12 hours every day in our life, like sweating out. And people say that, okay, it's like a dangal. It's not like, that you are just kind of having a relaxed time. It can't be. It can't be. It can't be. No, never. So that I saw my father doing so much practice, hard work, and then people, the friends, and sometimes they knew, oh, your father is a Kathak dancer. So I felt shame, like, to telling them. And that is the reality. That is the reality. But I'm talking about my time when I was studying. Yes, and it is very important. Like you grown up in a family where your father used to be dancing. Okay. Yeah. And at the same time, you still facing all these obstructions from the society, still you pick that profession. So it's really a different angle of our thinking, whatever it's happening, but it will not going to affect someone who is really passionate about his or her passion, art form. Yeah, that's sure. So what I'm saying that then but by time wise things have changed, and it's also depends how you are presenting yourself, how you're performing. So I remember my first thing when I was in class 8, I got the opportunity to say a poetry of Mahakavi Niralaji, Aa Rahi Ravi Ki Savari. This poetry.
So I participated in. I was a very shy person in my basic studies. So I presented it. I told my father that father, I'm going to present this. I'm participating in this poetry competition. And my teacher said that if you can do some of the actions, because she knew that my father is a dancer. But I told, I am a tabla player. I don't dance. You know, I can play tabla. I have did a lot of performances in tabla in my school. But she said, okay, if you can try. Then I said, my father, and then he taught me, and I tried to do it, and it went really well, and I won the competition. Wow. And people really appreciated it. I studied from Lucknow Christian College. So in my basic studies from Lucknow Christian College, and people used to speak English there. So there was like from high society people and all. But they appreciated it very much. So it gave me a power. You know? So why not, if I can be a Kathak dancer, that society, and it happened 2-3 times. Like I performed and people really liked it. So they appreciated it. And it's also teaching of my father. And as a child, I started to think, no, that's wrong. And also, as I said, there's a lot of, I'm talking it openly. I don't care if there be a controversy or not. But the thing is, my lot of friends are gays. My lot of friends are transgender. And they took dance as their life, you know. Because in Indian society, you don't give them respect. And that is the thing, where they will go. Now things have changed since last 5-6 years. You can say that now we have a legal things from law that this is accepted here in the society. But I am going abroad since 2003, and I have seen in they are from since like maybe 2002-3, like when I also went first time. Like yes, that is very common over there in like very common over there. Now it is accepted in the society. But if you talk about like 10 years back, 11 years back, it was not accepted. That people cannot express themselves. Where they will go? They choose dance as the mode. So that's why there is a lot of this people which are my very good friends. I really appreciate. They are very talented, and very honest and very beautiful people. You know, I love that. So as a human, so yes, that's the thing that. But all dancers are not like that, you know. So definitely, like people used to. I have faced the problem that people used to call, oh, chakka aa raha hai, and he's a hijda. Yeah. No, I'm telling you, that is the truth. That is the truth. 10 years back, they used to call like this. अबे इसको तो दशनिया है, अभी ये तो डांस करता है, अभी उसके पापा डांस करते हैं, ये डांस करता है. I have खराब लगता है. नहीं बहुत ही स्कूल में, कॉलेज में, अरे आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कर दो, 103 चक्कर मार दो, 150 चक्कर मार दो, बोलने वाले बोलते हैं ये बात. ठीक है. और अभी भी हमारे, आप देखो ना, आज की फिल्म में बोला जाता है. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आज के टाइम से एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, रितेश देशमुख की, और कौन सी की, हाउसफुल 4. दिस इज द टुडेज टाइम. रितेश देशमुख को डांसर दिखाया गया, कथक गुरु. नाम भी बहुत बड़ा अच्छे से महाराज लगाते हैं लोग. घाघरे में, लहंगे में क्या छुपा रखा है, मतलब क्योंकि वो ऐसे ऐसे करते हैं, बात करते हैं. एंड वी शुड टॉक अबाउट दैट. यस, डेफिनेटली टॉक अबाउट, डेफिनेटली, कि ये बॉलीवुड ऐसे क्यों प्रेजेंट करता है अपनी टीआरपी के लिए कथक डांसर्स, मेल कथक डांसर. वही तो. मेल कथक डांसर जो भी डांस गुरु दिखाता है, जिसको भी डांस गुरु दिखाता है, ऐसे दिखाता है कि सच में ये एज ए डांसर ये बहुत दुख पहुंचता है. ये बहुत दुख पहुंचता है कि ऐसा दिखाना नहीं चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. एंड द थिंग इज, सी, आप अदर कल्चर्स को देखें, आप चाइना को देखें, आप देखिए जिसका कोई कल्चर, अमेरिका अभी अभी पैदा हुआ है, आप यूरोप को देखिए, वो अपने कल्चर को कितने ब्रेवली और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं. हम लोग ऐसे कल्चर को, हम कहते हैं भगवान शिव हमारे देवी देवता है, हमारे भाई कृष्ण भी हमारे डांस करते हैं, हमारे शिव भी डांस करते हैं, हमारे गणेश भी डांस करते हैं, सारे देवता नृत्य करते हैं. आप और देखिए क्या उनकी बढ़िया बॉडी होती है, बढ़िया मिजाज होता है. कभी देखा 6 पैक में डांस करते हैं. अब ये जमाना धीरे धीरे आ रहा है. मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको आपने क्यों नहीं प्रेजेंट किया? यू हैड अ बिग स्केल. व्हाई यू डू नॉट प्रेजेंटेड डांसर एज अ
कि भाई दिखाते किसी proper मूवी dancer में कि like how it is, like how it is, it's not like उसको लेके मजाक बनाने के लिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही तो बात सिर्फ एक बताई। मूवी जो मुझे समझ में आई वो थी झनक झनक पायल बाजी, जिसमें कि हाँ, अच्छी तरह से कथक क्योंकि को उन्हें दिखाया। वो एक्चुअली क्या था उसमें गोपी जी खुद परफॉर्म किए थे ना, तो उसमें एक डांसर कैसा होता है और खुद जब डांसर है तो वो ठीक है, वो तो सही दिखाया। और मेरे ख्याल से वो तो एक मतलब मिसाल बन गया मतलब इन बॉलीवुड बिल्कुल, फिल्म इंडस्ट्री देखिए एज आई वेल। थिंक बॉलीवुड हैव गिवन कथक मतलब उसने दिखाया है कथक को लोगों को बहुत अच्छी तरह से, लोगों को पता चला कथक क्या है। पर थोड़ा सा निराशा है कि कथक को अच्छी तरह से नहीं दिखाया बिल्कुल अपने टीआरपी के लिए। उसको वो हम उनकी थैंकफुल रहता है अगर उसी चीज को वो और अच्छे से दिखाते। क्या बिल्कुल लेडीज को दिखाते हैं तो मुजरा करते हुए दिखाते हैं, क्यों भाई कथक मुजरा ही है। 5,000 साल पुरानी सभ्यता जो मंदिरों में होती थी उसको आपने हमेशा मुजरे में दिखाया कि हाँ कलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, इसके अलावा भी कथक होता है ना। तो आज तक वही दिखा रहे हैं, आज तक वही दिखा रहे हैं, उसको आप चेंज करो क्योंकि ये हमारा कल्चर है। हम जब विदेश आप में जाते हैं 5,000 ऑडियंस बैठ के ताली बजाती है कि अच्छा आई एम बिल्कुल प्राउड टू बी इंडियन। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो उस चीज को आपने क्यों नहीं दिखाया है, ये मुझे थोड़ा सा है। और इसको हम फेस और करते सच कल को हमारे में बच्चे फेस करेंगे। नहीं, और सच में मतलब इसी आपका बातों से मुझे ये लग रहा है कि जैसे कि बॉलीवुड का बात आया तो ठीक है, मैं इसके बारे में चर्चा तो ऐसे किसी से अभी नहीं किए, पर एक अच्छी बात बोले, क्योंकि इसके साथ क्या है, जैसे कि मेरा जो टॉपिक है ना कि फाइनेंस को कैसे संभाले, तो अगर कथक को इसी तरह दिखाए और लोग अगर सोचेंगे कि नहीं मुझे इससे पैसा कमाना है, तो क्या होता है कि किसी इनडायरेक्ट मतलब फोर्स से वो शायद दूसरी तरह भागता है, मतलब बिल्कुल राइट। हाँ, क्योंकि वो उनका भी कुछ मतलब मैं उनको दोष भी एकदम बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उनका भी पैसे का हो सकता है कि जरूरत है, क्योंकि एंड ऑफ द डे एज एन आर्टिस्ट, नो एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू गेट बोथ द फेम, नेम फेम एंड मनी एज वेल है, बट या तो आप क्या इसी वजह से मुझे लगे काम मिलेगा, हमें काम मिलेगा, हाँ ये करने से हाँ शायद काम हाँ, मिलेगा। और हर एक का जो चाहत है वो अलग अलग है। कोई मतलब कोई बिल्कुल जैसे कि आप देखे होंगे क्योंकि वो सब आएंगे, कोई कोई बड़े गुरु जो थे उनको अगर कोई बोला कि तुम डांस करके क्या करोगे, तो उनको लगता था, उन्होंने जवाब दिया कि मैं एक दिन अगर एक बार भी मुझे कुछ खाने के लिए मिला तो ठीक है, मैं दोबारा नहीं खाएंगे, ऐसा भी हाँ प्रताप जी ने बोले हैं। हाँ, तो ये भी उनका सोच है। और कोई ये हो सकता है कि जिनको लगेगी अगर मैं कथक या कुछ भी डांस करे तो उसमें बाकी जितने सारे लोग हैं उन जैसा मेरा गाड़ी बंगला सब कुछ होना चाहिए, ये भी है। कोई बिल्कुल। मतलब ये दोनों दोनों आप किसी को मतलब टोक नहीं सकते ना, कि हर एक का बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग सोच होता है और उसी को लेके उनको चलना पड़ता है, पर समाज में जो एस्टैब्लिश हो जाता है ना उसी को लेके मतलब उसी तरफ लोग भागते हैं। तो जी देखिए, मैंने वही कहा, मैं पर्सनल पॉइंट आउट किसी को नहीं कर रहा, मैं यहाँ पॉइंट आउट सिर्फ बॉलीवुड को कर रहा हूँ कि हाँ आप इसको अच्छे से प्रमोट कर सकते थे। बट आई होप अब शायद आगे करें या ना करें, आई डोंट नो, बट आज तक तो मैंने नहीं देखा। अभी भी कहीं ना कहीं कथक को इसी तरह से दिखाया जाता है, दो तरीके से लेके देखे। संजय लीला भंसाली जी ने महाराज जी को देख कुछ अच्छी कोशिशें की है, जिससे बिल्कुल, कैनवस पे देख के लगता है कि यार कथक क्या बात है, कितना सुंदर है। कथक क्या हो तो मैं कह रहा सकता हूँ है, कि चीजें बिल्कुल बदली हैं। अब बिल्कुल। मेरी लाइफ की ट्रैवलिंग जैसे चीजें बदली हैं वैसे ही रही लाइफ की ट्रैवलिंग। तो जब मुझे अप्रिसिएशन मिला देन आई वांटेड टू बी समथिंग। हाई स्कूल के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार देखो क्रिकेट में बैकग्राउंड है नहीं, आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड, देयर इज लॉट ऑफ पॉलिटिक्स देयर, नो एवरीबॉडी इज प्लेइंग क्रिकेट एंड वेरी फ्यू पीपल आर गेटिंग स्पेस इन इंडियन क्रिकेट टीम, यू नो। And then I have talked with my father and I have realized this is a big responsibility. I am और touching तुम्हें क्या generations of my क्रिकेटर family. बनना भी, तो तुम्हें एक टाइम तुमने सोचा था कि तुम्हें क्रिकेटर बनना है, ऐसा भी सोच था कभी? हाँ, ऐसा सोच थी मेरी कॉलेज में। मैं स्टेट लेवल तक खेलने गया था, तो आई हैव इन अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, यू नो। तो आई इन अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज थिंकिंग कि भाई मैं फास्ट बॉलर था, बहुत अच्छी बॉलिंग करता था और बैटिंग भी काफी डिफेंसिव थी, फील्डिंग भी अच्छी थी। लेकिन फिर यही है कि मुझे प्लीज थोड़ा कहीं आगे आ जाओगे, सिलेक्शन नहीं मिला। थोड़ा सॉरी। आगे आ जाओगे, थोड़ा आगे आ जाओगे, जी जी नजदीक। जी। ये भी हुआ कि मेरे को सिलेक्शन नहीं हुआ टीम में। एक बार थोड़ा पॉलिटिक्स हुआ, जो आज भी होता है इंडियन टीम में भी होता है कभी कभी, जिसका जो फेवर है उसको दे दिया जाता है। तो देन आई वाज लाइक काइंड ऑफ अ ब्रोकन। आई सेड कि तो मैंने इतनी मेहनत की इसके ऊपर 6-7 साल और आगे कुछ फ्यूचर नहीं।
फिर पिताजी से बात की, उन्होंने ये कहा कि भाई, उनसे बहुत मेरी गहन चर्चा हुई। मैं पढ़ाई में कोई बहुत खास नहीं था, है ना, किसी तरह से मैं पास हो गया। तबले में भी कोई बहुत खास नहीं था कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं डांस छुपा हुआ था। वो और जीन में, वो हाई जीन स्कूल में के है, बाद, वो जीन में है। हाँ, तो हाई स्कूल के बाद मैंने गया पापा के पास, मैंने कहा कि पापा, आई वांट टू लर्न नाउ कथक डांस, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। और मुझे पता था कि उनसे सीखना मतलब कि अब मौत को दावत देना है, क्योंकि ही वाज लाइक वेरी वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। तो उन्होंने बैठाया, कहा कि बेटा मैं सिखाऊंगा तो, लेकिन जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई जिंदगी में कुछ बनना है तो फिर तैयार हो जाओ, करना तो पड़ेगा ही। तो मैंने कहा ठीक है। तो अगले दिन से, अच्छा क्या फास्ट बॉलिंग करता था तो जोश बहुत था उस समय, तो कहा कि चलो मैं झेल जाऊंगा ट्रेनिंग, है ना। और वो हुआ क्या कि जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो हालत खराब हो गई। वो सुबह 3:30 बजे उठना, 3:30 AM यू हैव टू वेक अप। एंड उसके बाद 6 महीने मेरी बहुत रिगोरियस ट्रेनिंग, 6 महीने के आसपास, कि मतलब वो जो कहते थे वो, मतलब मेरे पिताजी ये मान के चलिए कि 1.5 साल 2 साल तो जो कहते थे पत्थर की लकीर था मेरे। मतलब मैं पूरी दुनिया भूल चुका था, सिर्फ डांस को सोचता था। एंड स्टार्टिंग 6 मंथ आई हैव डन वेरी मच हार्ड वर्क। मतलब रोज हम सभी ने किया है, 10 से 12 घंटा तो हमें करना ही पड़ता था रियाज, कम से कम, कि एक मकाम। और आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पिताजी का, पंडित अर्जुन मिश्रा जी का, कि एक सही एज पे उनकी बात मैंने मानी, मेहनत की, और उस मेहनत का फल मुझे आज तक मिल रहा है, इतनी इंजरीज होने के बाद भी। इसलिए मैं कहूंगा सारे यंगस्टर्स से कि अपने गुरु की बात आप जरूर मानें, क्योंकि आपसे बड़े होते हैं, दे हैव सीन द लाइफ, दे हैव सीन एवरीथिंग इन देयर लाइफ। आंख बंद करके भरोसा करो जो कहते हैं। यही है गुरु शिष्य परंपरा। पत्थर की लकीर होनी चाहिए, जो आपके गुरु ने कहा जब आप स्टूडेंट लाइफ में। वही वही और इस समय यू कैन डू, यू हैव दैट power in your body that if you want you can practice for 10-12 hours, so why not? This time you have that young yes energy when you are between yes 16 yes to yes 16 to 26 27, then it's becoming difficult. We yes have lot of health issues in 30s we start, because क्या समय चेंज हो रहा है। पहले लोग 100 साल जीते थे, अभी 60 साल में ही बोल जाते हैं। in 60 years everything is like finishing now because of the food and everything. yes तो yes आप मेहनत करो, तो मेहनत करी। पहला परफॉर्मेंस हुआ मेरा लखनऊ में, और बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स था, बिकॉज पीपल वाज नोइंग दैट पंडित अर्जुन मिश्रा सन इज नाउ डूइंग हार्ड वर्क एंड ही इज गोइंग टू बी परफॉर्मिंग नाउ, यू नो। So in 2003, in beginning, I have, after 6 months of training, I have won national gold medal, which is a youth festival. So which happened for in like 2020. That time it was like 24 states, and I won the first prize there. So that gave me immense power, you know, that I can do something. yes And then I started to perform. After that, I did my first performance with one of my father's students, and so much good response in yes Lucknow. by The the way. audience was feeling. Yeah, and I forgot to mention that, like, yes, he has got that Bismillah Khan Award, the junior, like, SNA award, and it's like a um, for any dancer at his age, it's really an honor, and like it gives somebody more confident and more responsible when he or she gets any award. So it's like a, it's a push, like it's a, like more responsibility comes to an artist to continue his or her journey in the field. So Absolutely, भैया. मैं So अनुज after अभी that, you know, yeah, after that I just started to perform, you know, and after 6 months and after 1 year, I did an international dance competition, which was organized by Pandit Jasraj ji organization. It was a very tough competition, and then I got a place on that, and there were 6 finalists in all areas, and we had to go to New York for the final competition. But what happened, and it was a performance. But what at the same time, I got interview. I got an interview because I got a call from Kumandi Lakhia ji, my Dadi Guruji, and we have a very beautiful relationship because she is the one. I was a very ill in my small age. I was like 1-2 years. She saved my life when my father was in Ahmedabad. He was like a lecturer there. So I'm very thankful to her. And she came to know that I'm dancing now, you know, because people was hearing that I won a national gold medalist and I'm dancing. And Kadam group came here, they saw my dance, so they told her, and we had attachment from heart. So she called my father. She said there is a French choreographer from France. She's very famous. Her name was Karine Sapota,
and she was here and she was looking for a young male dancer. So your boy, if he can come and give an interview. So I went there and I did my interview and I got selected on that with a very senior dancer, Srimati Vishali Trivedi ji, and a very senior student of Kunditakya ji. And then I went with her for this project. So I was selected in 800 dancers in Kathak, Bharatanatyam, Kathakali, Manipuri, Odisha. So I was looking at young male dancers. So that's all blessings of my father. I went to France. That was my first time after 1 year. And then my journey started as a performer. So I went with a one company and then second and then third and fourth. So it went till 2008. I was working with different international dance companies worldwide. And so all blessings of my father. I did my hard work, but you need a good guru in your life. कहा जाता है ना कि सच्चे गुरु और सच्चे मित्र मिलना बड़ा मुश्किल है. तो I was very lucky. बहुत hard थे. कुछ भी आसानी से नहीं सिखाते थे. जब आदमी बेटा होता है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है और गुरु कभी फर्क नहीं करता. सच्चा गुरु कभी फर्क नहीं करेगा. अपने शिष्य और अपने जब तक आप करके बहुत सारी चीजें मैं अपने पिताजी से नहीं सीख पाया. उनको बोलते हुए सुनता था, अपने घराने की बंदिशें सुनता था और सुन के बहुत याद किया. कुछ चीजें ऐसे भी जो मुझे हवा भी नहीं लगी, वो चले गए. शायद उनको भी नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे. और कहते थे कि बेटा, हमने उनसे सुना है कि सुपात्र को सिखाना कुपात्र को नहीं. जो डिजर्व करता है, हाँ, जो डिजर्व करता है, पात्र जो सही पात्र में डालो, पात्र सही होना चाहिए. कुपात्र नहीं. सुपात्र को सिखाओ, कुपात्र नहीं. ये नहीं कि तुम्हारा स्टूडेंट है उसको बस सिखाना है तो सिखा दिया. पहले आप देखो कि वो इतना हार्ड वर्क कर रहा है, वो इतना डेडिकेटेड एंड डिवोटेड है. हालांकि आज के टाइम में संदीप भाई थोड़ा सा हम लोगों को बिकॉज दे आर नॉट सो मच यंगस्टर्स आर कमिंग, सो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा उनको सपोर्ट करना पड़ता है. समय चेंज हो गया है, पुराने गुरुओं की तरह हम नहीं सोच सकते. सो kind of we are changing that and now we are giving talim to the students. जो हमें सीखने में 6 से 8 साल लग गए एक टुकड़ा एक बंदिश सीखने में, और फिर वो एक 2 महीने में शायद एक बंदिश सीख जाए. और आज के समय हमें जल्दी बताना पड़ता है. बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे कि हम लोग जब सीखे थे तो इतने सालों सीखने के बाद जब परफॉर्मेंस शुरू किए ना, तो खुद को ही चुनना पड़ा था कि कौन सा बोल मेरे बॉडी में सूट कर रहा है. डेफिनेटली वो तो गुरु के पास जाके और एक बार मतलब उसको सफाई कर लेते हैं क्योंकि ये सही कर रहा हूँ कि नहीं, पर फिर भी जो मतलब प्रेजेंटेशन वो खुद हम सोचते थे. पर अभी हम लोग जो करते हैं कि जो हमारा जो सेटअप है वही एकदम शुरुआत में, मतलब शुरू में हम उनको सिखा देते हैं ताकि उनको सब कुछ सीखने के बाद वो चूज करना ना पड़े. जो एकदम ऑलरेडी मतलब चोजन है ना, उसी को हम सिखा देते हैं और फिर बाद में जाके डेफिनेटली वो लोग भी अपना करने का कोशिश करते हैं. तो वो तो करना ही चाहिए, नहीं तो सब एक जैसा हो जाएगा. पर यही फर्क है पहले हम लोगों का शिक्षा और अभी हम लोग जो शिक्षा दे रहे हैं इसमें, क्योंकि बहुत सारे लड़ी सीखने के बाद शायद मुझे लगा कि चलो ये लड़ी मेरे लिए अच्छा है और ये ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, तो पर बहुत सारे सीखे हैं. और सिर्फ वही लड़ी नहीं, उस लड़ी का जो मतलब पैटर्न, सब पैटर्न तो नहीं करते हैं, तो जो पैटर्न अच्छा लगता है उसको लेके हम उसको समेट के प्रेजेंट करते हैं और फिर देखते हैं जब उसका रिएक्शन, ऑडियंस रिएक्शन अच्छा होता है तो हम उसको अपना बना लेते हैं. ऐसे जर्नी होता है कोई भी कलाकार को. पर अभी जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों के साथ अभी तो ग्रुप भी आ गए, मेरे ख्याल से आप भी सहमत होंगे कि ग्रुप आने से क्या है, आपका जो मतलब प्रेजेंटेशन लेवल है उसी को आप अपने जो ग्रुप मेंबर्स है, चाहे वो आपका स्टूडेंट्स हो या दूसरे मतलब कोई भी ग्रुप मेंबर्स है, उन्हीं को उसी चीज को लेके आपको प्रेजेंट करना है. तो क्या होता है कि वो जो आप इतने साल सीखने के बाद उस मकाम पे आए और ये जो चूज किए कि ये लड़ी मुझे करना है और ये पैटर्न उस लड़ी में के में ही अंदर ये पैटर्न मुझे डालना है, तो वो आप सिखा देते हैं. क्योंकि और उससे क्या होता है, उनका टाइम स्पैन मतलब सीखने का जो स्पैन लंबा वो छोटा हो जाता है क्योंकि उनको वो समझ में आ जाता है. मेरे ऐसा लगता है. तो बस यही जर्नी है मेरी. 2008 में मैंने अपनी खुद की डांस कंपनी फॉर्म की, अनुज मिश्रा डांस कंपनी. आई हैड अ मैनेजर इन यूरोप एंड देन they have promoted me at same time.
आई हैड अ गुड नेम इन इंडिया एंड लोग Yes, देख रहे yes. थे मैं कैसे भारत के काम को लेके बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, और मैं अब्रॉड से आर्टिस्टों को बुलाता था, अपने पिताजी का फेस्टिवल करता था, या अपने पिताजी से तब भी करता था मैं नृत्य उत्सव के नाम से, और मैंने काफी आर्टिस्टों को लखनऊ बुलाया। तो ये मेरा अच्छा काम, मैं क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता हूँ, मैं कथक के लिए सोचता हूँ, और मैं ये मेरा एक ड्रीम है कि कथक कैसे हमारे देश में और पूरे संसार में फैले, जो मैं अपने पिताजी से देखा। सो दैट आई हैव सीन, एंड ये उसके बाद मैंने इंडिया में भी काफी परफॉर्मेंसेस बड़े बड़े फेस्टिवल में किए, आशीर्वाद से अब्रॉड में किए, और अब मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी पगड़ी रस्म हुई। मेरे घर के बुजुर्ग ने, जो हमारे फैमिली के आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े, चाहे मेरे चाचा हुए, मेरे फूफा हुए, सभी लोग बड़े बड़े पोस्ट पे हैं इंडिया में, उनको लगा कि हाँ मैं शायद इस परंपरा को आई कैन टेक फॉरवर्ड। तो पगड़ी रस्म हुए, उसके बाद मैंने सिखाना शुरू किया, और मुझे लगता है कि जो मैंने अपने फादर से देखा, बिकॉज मुझे लगता है कि वो एक गुरु भी थे, एक डांसर भी बहुत अच्छे थे, और कोरियोग्राफर भी बहुत अच्छे थे। तो ये मैंने जो सीखा उनसे, उस पाथ पे चलने की कोशिश करता हूँ, और चल के रोज खुद सीखता हूँ, है ना, खुद सीखता हूँ, क्योंकि ये तो अथाह समुद्र है, हम जितना डीप जाएंगे ये उतना डीप है। तो मैं गुरु नहीं मानता हूँ, हाँ लोग मुझे कहते हैं, मैं अपने आप को पंडित नहीं मानता हूँ, कुछ लोग कहते हैं, तो मैं किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत सीखना बाकी है, लाइफ टाइम में सीखता रहूंगा, और अच्छा लगता है कि हाँ सिखा भी रहा हूँ और सीख भी रहा हूँ, तो ये जर्नी चल रही है। अच्छा, ये इसमें एक मेरा प्रश्न रहेगा कि हमें पता है कि एक टाइम तुम्हारे फैमिली में, जब मतलब तुम्हारा पिताजी का मतलब बीमार पड़े ना, उनको जाने से पहले, तो वो एक टाइम तुमने कैसे संभाला, ये अगर शेयर थोड़ा जितना हो सके अगर कर सकते हो तो। क्या है कि जब कोई यंगस्टर्स या कोई भी कलाकार ऐसे मतलब दुविधा में चलते हैं कि वो कैसे अपना जीवन को संभाले, पर ये तुम उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है कि अगर मतलब अनुज जी ने किए हैं तो हम भी कर सकते हैं, मतलब ये जो, तो इसके बारे में वो टाइम कैसा था और उसको तुमने कैसे संभाला, ये अगर थोड़ा। भैया आई थिंक जो पिता होता है ना, फादर, वो एक बड़े छाव की तरह होते हैं, पेड़ की तरह, जो आपको लाइफ की डिफिकल्टीज को पता नहीं लगने देते। तो जब मेरे फादर थे तो मुझे कुछ करना नहीं होता था, मैं खाली रियाज करता था, जिम जाता था, रियाज करता था, जिम जाता था, बॉडी बनाता, मुझे बॉडी बनाने का शौक था और रियाज करने का शौक था, घूमने फिरने का शौक था, थोड़ा बहुत घूमता फिरता भी था। अच्छा फिर क्या है कि यंग एज में ही मेरा टूरिंग भी शुरू हो गई, तो इंडिया में बहुत कम समय रहता था, जब रहता था तो मैं रियाज करता था और जिम जाता था। पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे, और ये 2003 से करता था मैं, उसके पहले तो मैं बहुत छोटा था। 2011 में पता चला मेरे फादर को कैंसर, बोन कैंसर, और वो एक बहुत बड़ा झटका था पूरे परिवार के लिए, बिकॉज इन इंडिया आर्टिस्ट डोंट केयर अबाउट इंश्योरेंसेस, especially the old artists, you know, like the gurus and all, who are not my or your age. So now the things are there, that there's a lot of medical insurance, insurances, there's a lot of term plans and everything, that even if you are gone, you can take care of your family. But that time my father had done a lot of LIC insurances, yeah, like whenever he's gone, his family is not facing such a big problem, okay, but he didn't had a medical insurance, okay. So what happened, that we was facing a big financial crisis, okay, but भगवान सबके दरवाजे खोलता है, भगवान बड़ा दयालु है ना। तो at same time I was touring a lot, मेरा बड़ा अच्छा टूर का चल रहा था, और आए दिन इंडिया में 8 से 9 महीने में इंडिया से बाहर रहता था, तो पैसे आ रहे थे मेरे पास, और क्या है कि यूरो डॉलर्स में वहां के हिसाब से एक बहुत ठीक ठाक अमाउंट, बट यहाँ के हिसाब से एक बहुत गुड अमाउंट, बट वो सारा पैसा मेरे पिताजी के इलाज पे खर्च हो, क्योंकि उनका 80 से 90 हजार रुपए महीने का खर्च था सिर्फ दवाइयों, जो कि 80 to 90,000 उनका लगभग थर्ड स्टेज पे था बोन कैंसर, और स्टार्टिंग एज में स्टेज पे, और डॉक्टर कह रहा था मैक्सिमम 2 साल। सो इट वाज अ बिग शॉक फॉर अस। मेरी बाप की बहन है स्मृति, उसकी शादी हमारा क्या है ना, अर्निंग भी इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि सिखाने से अर्निंग नहीं होती है इतनी ज्यादा, और अभी तो परफॉर्मेंस से ज्यादा होता है, डेफिनेटली परफॉर्मेंस से ज्यादा होता है। हाँ, तो क्या हो रहा था कि मैनेज किया किसी तरह से, और मेरे फादर ने इतना काम किया लखनऊ के लिए, शायद उनको इतने अवार्ड्स नहीं दिए गए जितने वो डिजर्व करते थे, बट लोग देखते थे उनका काम। लखनऊ में उन्होंने, महाराज जी ने उनको लखनऊ भेजा, और लखनऊ
उन्होंने कथक को बहुत संभाल के रखा, बड़ी मेहनत के साथ, बहुत मेहनती आदमी थे। मैं तो उसका शायद 25% भी नहीं हूँ जो मेरे फादर थे। तो उन्होंने जिस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ाया, वो उनके कर्म थे। और उनको शायद गवर्नमेंट ने देखा, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती तो हमारे लिए और मुश्किल हो जाता। इसमें हमें अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी उस समय, और मेरे फादर के 5 सालों में 2 बार बड़े ट्रांसप्लांट, जिसमें कि लगभग 30 लाख रुपए का खर्चा आया, 30 लाख रुपए का खर्चा आया, और उसमें से 50% हमें गवर्नमेंट ने दिया और 50% मुझे अरेंज करना पड़ा। बट दैट वाज अरेंज, अदर देन इस मेडिकेशन, अदर देन कि साल में उनको 2 बार हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, बिकॉज वो राजा आदमी थे, उनको जो खाना है वो खाएंगे, वो इतना कंट्रोल में किसी के नहीं आते थे। कि पिताजी को देखिए खाने का बड़ा शौक था, बिकॉज हर आर्टिस्ट को होता है, खुद बनाते भी थे, एंड ही वाज वेरी फाउंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड एट दैट टाइम। एंड लखनऊ में तो काफी अच्छा क्यूजिन है और मुगल क्यूजिन, तो वो टुंडे कबाबी और बिरयानी ये सब उनको बड़ा शौक था खाने का। तो हम लोग बड़ा रोकते थे, बट क्या है कि नहीं नहीं मुझे खाना है, और साथ में कुछ उनको डायबिटीज और ये सब भी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन so he used to live like a king. He used to say that if you want to live like a king, जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो अब ये हुआ क्या कि डॉक्टर ने 2 साल कहा था, 5 साल, उन्होंने 5 साल वो हमारे साथ रहे, बहुत अच्छे से रहे, and he was very happy at that last years I remember, because we went to Switzerland and there was a art movie had made on my father, and he used to do, because of the bone cancer he couldn't perform so like very strong, but he was a very strong dancer at that time. So what he did that he was 24 hours in dance, and he used to do bhava. He moved to bhava, or the bhava expression he used to do, that just by sitting and doing bhava expressions in only one line, like bihari ko apne bas kar paun, and like only on this time he did bhav for like 20 minutes, and no bhava got repeated. So we had goosebumps while seeing that, you know. So that is, and then he went to Switzerland, and even doctor said that you can have a glass of wine also. So he really enjoyed. He went to a farmhouse and he had good barbecue party, and he had this drink of champagne and wine. So he really enjoyed. And after that, when we come back, I had a project in Spain with a very big movie director called Carlos Saura, and he made a theater production with flamenco and Kathak. So I went to Spain. At that time, I went with my sister Kantika, and my father said, because she was also got selected, my father said that you have to take to Kantika, because I was a bit worried. Because what happened after my Smriti's marriage, me and Kantika was taking care of him and my mother. And he used to listen to me more rather Kantika, because she was very small at that time. But still she was living with him all the time, and I was in abroad. You know? So she was one who was taking good care of him, and I was not married at that time. So I said, okay, but one of us have to be here. So he said, okay, you stay here, but I will send Kantika to Spain. And that was not possible, because I was one of the Kathak choreographers for that production. So I said, it's not happening. So he said, no, I will take care. You have to take Kantika. So he was so open-minded, and he always supported girls of our home, that they should perform. They should be same as me, you know. Yes. So we both went, and he promised me that he will never go out. They were my friends, they were my relatives who was taking care of him. But nobody used to like tell him that he was like a guru. So when he says something, everybody was very scared of him. So he called one of my friend, and he said, I want to go to Tunde Kababi. And he went there. And I'm telling you this is the story of 2015 beginning. And that time he went to this Tunde Kababi, 15 media. And he got swine flu from there, I think. He got swine flu from there, and because a lot of people were sitting, and his immunity was very low because of the cancer. And because in 1 month of my tour, everything was good. I was talking with him all the time, me and Kantika. But this last 5 days or 5 shows, first day we got call that he's very ill and he had to go to the hospital. So I was very worried, and every single day we was getting news that now he's getting better. Now he's very serious. Maybe we have to move to the ventilator and all. So I was very worried, and after 4 shows, I had to cancel 1 show. It was in my contract, but I'm very thankful to the Spain organization that they urged
they have accepted my request, and Kantika performed alone there. My uncle was also in Spain, so I had cancelled one show. I came back to Lucknow, and I was in Dubai in transit, and I came to know that he was moved to ventilator for my son. So it was a big shock for me. I came there, and the doctor said that we got the disease, but it's swine flu. But now the problem is my father's immunity was very low, and Because of the we cancer. tried our best. In 1 month, next 1 month, I have lost all my savings. Whatever I had with 10, 11 years of my performance, whatever I have saved, I have given everything, because he was everything for me. He is everything for me. Whatever I am today, because of him. So even I thought to sell my home if it's needed. That time also government helped us little bit, which was a very big help. So in a month I have spent it like 40-45 lakhs or nearly 50 lakh rupees, and tried to save him, because every day we have to spend like 1.5 lakh rupees, 2 lakh rupees and all. And some help came from government, but we tried everything. But also we came to know that even if he will survive, he will be like, doctor said to me, he will be like a vegetable, because he will be not able to move, because the shock and the hard medicines he have taken, his legs was not working properly. So I'm telling you this because I have suffered all this. So I went to temple, and I went before also, but I went to temple, I went to mosque, I went to church, everywhere, and I said to God that please do best for him. What is best for him? So maybe he's now more happy performing somewhere in heaven. So I said, take best for him. And then I have, that time financially, mentally, we have to stay in hospital for 1 month. With him, I was staying all the time. And also just when he went to ICU and ventilator, but before that also a lot of time we have to go to hospital in all these 5 years. We have to stay there. And so this was very hard time. But I think if you are willing to do something and you are strong, God will help you, surely. And be honest, and somewhere the help will come. So this is the message for all youngsters. Don't lose any time hope. Hope is every time there, and do your hard work. कठिन परिश्रम के बिना अलावा कोई मैजिक नहीं है. कुछ नहीं होता है, ये कोई मैजिक नहीं होता है, कुछ मैजिक नहीं है, शॉर्टकट नहीं होता. सिर्फ हार्ड वर्क करो, गुरु का अपने ध्यान रखो और उस प्रभु का ध्यान रखो, माता पिता की इज्जत करो, एंड यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ. शायद आप इतने अच्छे ना बन पाओ, शायद आप इतना टॉप लेवल पे ना जा पाओ, लेकिन एक अच्छे इंसान बनोगे और सोसाइटी में यू विल हैव इज्जत होगी, इतना रुपया पैसा कमा पाओगे कि दाल रोटी खा. अब आप देखिए, आपकी जो ग्रीड है उसका कोई अंत नहीं है. There is no end of greed. If you want to be a billionaire, you want to be a millionaire, then you want to be a billionaire, then you want more money. So it is never. But artist, मेरे फादर कहते थे, आर्टिस्ट कभी भूखा नहीं सोता. तो अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो रोटी सब्जी दाल तो भगवान दे ही देगा. आप इतना खा के जीने के लिए जो बेसिक्स वो मिल जाती है. आज की चिंता होती है in today's time. It's getting more difficult for artists because of the COVID-19 and the lockdown. So how are you managing at this moment? How are you managing, like in terms of like everything? जी देखिए, ऐसा है कि we have an institution. My father had established it. He was the founder of Kathak Academy, which was established in 1991. And my father used to teach children here in Kathak Academy, and he was the president. Now I was the artistic director. Now I am the president now of this academy, and still I teach children. So एक चीज क्या होती है कि कथक फील्ड में जो बच्चे आते हैं ना, वो या तो आइडल फ्रॉम मिडिल क्लास होते हैं या फिर लोअर क्लास होते हैं. बड़े घर के बच्चे हैं वो आजकल हिप हॉप और वेस्टर्न और कंटेम्प्रेरी सीखने में ज्यादा व्यस्त हैं. ठीक है, तो क्या है कि कभी रेयर चांस होता है कि बड़े घर के बच्चे आते हैं, क्योंकि आजकल वो भी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा वेस्टर्न कल्चर पहले सीखे. इंडियन कल्चर तो घर की मुर्गी दाल बराबर, सीखा नहीं सीखा चलेगा, है ना. तो जो हमारे ये बच्चे हैं ये आते हैं, और इसमें से बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं दे आर वेरी पुअर. सो द थिंग इज आई नेवर आस्क देम फॉर फीस. लाइक 70% of my children, they don't used to pay, especially I'm talking about the who become professional. Okay, and I don't used to ask them for fee because I was earning a okay amount from abroad, by my performance. So I
used to help. I saw my father helping so many children, you know. So it was in my sanskar. So I was trying to help them also. What I learned from my father, I tried them to help at the same time. If you have money, you give. And my fees is also very, very low. You know, it is like 1,000 rupees a month, which is nothing, you know. So but it's not much, but if somebody is not able to pay, I don't ask them to pay. I said, you pay whenever you have money. Even I made my students, some of my students are professional now, they go to abroad for performances. And मैंने कहा जब तेरे पास पैसा होगा तब देना भाई, आपके पास जब हो तो वो अपनी श्रद्धा से आते हैं, कुछ दे देते हैं, तो मैं कभी मना भी नहीं करता हूँ कि अगर मैं अच्छा उसका रेशियो कैसा है, गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो स्टूडेंट्स में? वो तो सभी को पता है, बॉयज बड़े कम है हमारी फील्ड में, लेकिन हाँ इधर इस बीच कुछ बड़े हैं देख के, यू कैन से बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ मे बी रियलिटी शोज, लोग देख रहे हैं कि भाई लड़के भी इस फील्ड में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज and I think like initial like younger students might be less, but like senior students there you can get like many boys as well, like not from the childhood 5 से 6 जी 5 से 6 लड़के कर रहे हैं अभी, स्टूडेंट है वो अच्छा कर रहे हैं, और इसके अलावा लड़कियां ज्यादा हैं भाई, लड़कियां तो हमारी लगभग 20 से 25 है प्रोफेशनल जो अच्छा कर रही है, मतलब सीख रही है, अच्छे कथक डांसर बनने के मोड पे है, अच्छी कथक की सेवा कर रही है। वेरी गुड, तो ऐसे बच्चे हैं हमारे पास। मेरे बाकी भी जो छोटे स्टूडेंट है वो तो बहुत बच्चे हैं अभी, है तादाद में है लेकिन छोटे हैं, बच्चों का तो अलग बात तो है। अर्निंग हो रही भैया वो कहीं ना कहीं अभी जो हो रही है वो ट्यूशंस के थ्रू ही हो रही है, बिकॉज टूर वी कैन नॉट डू एनी टूर नाउ, and you have to forget for at least 1 year, one and a half years, you know, because it's also for our family safety also, and also in abroad it is not possible. You can see the condition of Europe or condition of Canada or condition of America, everywhere even the economy is like suffering a lot. Yeah. Even to perform and to go to another state in India is also a tough task, you know. So it's better to stay at home for at least 5-6 months and to teach, you know. Online is a good mode, social media is good mode, but now I think if an artist is performing, maybe 1 or 2 performances is enough, and then you try to establish, every artist should try to establish a mode of online paying performance instead of doing paying performance. Yes. I think 1 or 2 performances is okay to show your talent. Yes. Even I'm talking about big gurus or young generation, 1 or 2 performances is enough. एक चावल देख के समझ में आ जाता है चावल कैसा है, तो आप और वो रह जाता ना, क्योंकि ऑनलाइन में वो तो रह ही जाता ना, कि अगर लाइव शो होता तो आप जो गए उसी को देखने को लिए मिला है, पर ऑनलाइन होने से तो आप अगर मिस भी कर जाए तो वो तो रह गया ना, तो आप बाद में भी देख सकते हैं, तो इट इज फॉरएवर, इट रिमेन्स फॉरएवर, इट इज फॉरएवर। सो द थिंग इज कि वो अगर हो जाए अच्छा, तो अभी सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप ऑनलाइन जो मैं सिखा रहा हूँ उन लोगों को, कुछ बच्चे यहाँ इंडिया में भी सीख रहे हैं, कुछ लोग अब्रॉड में भी सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि वहां पे भी बहुत तकलीफ है इस वक्त, ओके, तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो भी सीख रहे हैं ठीक ठाक तादाद में, और थोड़ी बहुत अर्निंग हो जा रही है उससे, हमारा घर चल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स हम सभी आर्टिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि भाई online is the only mode from which we can earn now, because nobody is coming to your home to learn dance. No. And performance as well. Yeah, as performance. अब इसको 1 से 1.5 साल लग जाएगा सही होने में, तो यही तरीका है, जो भी आपके 15, 20, 25 स्टूडेंट सीख रहे हैं वही एक मोड हो सकता है, और उसमें भी हमको फी बहुत मिनिमल रखनी पड़ती है, बिकॉज एवरीबडी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, so we cannot ask for much. Yes, है ना, उनका भी सोचना पड़ेगा किसकी जॉब चल रही है नहीं चल रही है, we cannot ask for big amount for teaching. ना डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से मतलब आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए भी एक मिसाल बन के रहेगा हमारा ये डिस्कशन, एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड लाइक to share all of your experience with the audience, and hope like we all will be safe and will be coming back very soon with proper precaution and everything, because the artist can't be like far from the stage, so that is our main like temple. So one thing I wanted to say, because see, artists are also like laborers, you know, of course हम मजदूर तो हमारे बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, हम सबने कोशिश की होगी अपनी तरफ से,
लेकिन हम भी कहीं ना कहीं वैसे ही हैं, बस कुर्ता हाँ, अच्छा पहने हुए क्योंकि हैं। हम भी अर्निंग्स तो तो एवरीडे अर्न करते हैं। हाँ, ऐसे तो कोई फिक्स होता नहीं ना हम लोगों का, जो जिसको नौकरी है मतलब कला के ऊपर, तो वो अलग बात है। पर बाकी जो बिल्कुल। फ्रीलांसर के हिसाब से जो काम करता है, वो तो एक तरह से, क्योंकि इसीलिए मुझे याद है लंदन में वहाँ डांस वर्कर बोलते हैं, मतलब जो जी। वीसा वीसा आता है ना, उसमें डांस लाइक दे डोंट राइट डांस आर्टिस्ट और डांसर कि डांस लाइक डांस वर्कर। Of course, that's why you apply for work permit and all. But Yes. my thing is that if we are like laborers and we are promoting our rich cultural heritage So worldwide, government, like we should. so government should help us without saying, without asking. But I see now a lot of artists they are asking, and I think this is responsibility of state, all states to help artists. And I think the things are happening now. Maybe I think maybe in a very small way. Maybe you and me, maybe we don't need that much help, but there are, of course, we Yes, need help. lots Of of course, we artists need help. who are really Of course, we suffering. need help. But there are artists who are not in social media. Lot of artists Yes, who belong from villages. What yes, about them? yes. I think me, you, other artists have to think We about can artists, have survive. to Yes, help them, have to help them. Plus, government should help each and every artist. yes, Give a small amount, but give that they should not face the problem of, survival. That is very, very. yes. That is the last thing I want to add. And thank you so much for the interview. I really enjoyed it, and I Yes. think it's very, very important. Thank Thank you. you. Thank you. Namaste. Namaskar.